Now student we discuss about combined equation of two lines. अगर दो हमारा जो चैप्टर है पेयर ऑफ लाइंस उसके एक्चुअल सिलेबस को हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स. पेयर मींस दो लाइंस, उसका कंबाइंड इक्वेशन. तो सपोज लाइन यू हैविंग इक्वेशन u1 a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and v is a line having equation a2x plus b2y plus c2 equals to 0. Now their combined equation is u into v equals to 0. Means a1x plus b1y plus c1 into a2x plus b2y equals to plus c2 equals to 0. Now suppose the point x1 y1 lies on a line v equals to 0. Then v is it satisfies the equation. Every point lies on u equal to 0. It satisfies the equation u equal to 0. Then we say that it also satisfies the equation uv equals to 0. It lies on the locus u into v equals to 0. And therefore it will satisfy the equation u into v equals to 0. Thus every point lies on u equal to 0 can satisfy its combined equation. U into v means combined equation. Similarly, अगर कोई पॉइंट v equals to 0 इस लाइन पे है, suppose a point lies on the line v equals to 0, then that point also satisfies the combined equation u into v equals to 0. Conversely, suppose x0 comma y0 is a one point. You can consider its converse. A point x0 comma y0 lies on the locus u into v equals to 0. Combined equation पे तो it satisfies the equation u equals to 0. We say that it satisfies at least one of the line u equal to 0 or v equals to 0. Thus uv equal to 0 represents combined equation of the lines u equal to 0 and v equals to 0. This is about the combined equation of lines. Now we'll discuss about the first part of this chapter, homogeneous equation of second degree. Now what is meant by, then the question arises, second degree, what is meant by degree of a term? Degree of term means sum of all indices of variables in a term. टर्म में जितने भी वेरिएबल्स है उसके पावर की एडिशन मीन्स डिग्री ऑफ टर्म. Now, sum of indices of all variables in a term is known as degree of term. Is known as degree of a term. For example, देखो स्टूडेंट 3x square y plus 7x cube plus 8x. इसमें तीन टर्म्स है. पहली टर्म की डिग्री क्या है? इसमें पहले टर्म की डिग्री 2 plus 1. x का पावर 2 है, y का पावर 1. डिग्री ऑफ फर्स्ट टर्म इज 3. Degree of first term is 3. 2 plus 1 3. सेकंड टर्म की डिग्री, इसमें एक ही वेरिएबल है तो सेकंड टर्म की डिग्री होगी 3. अगर यहां पे x इंटू वाई होता, xy, x का पावर 1 y का पावर 1, डिग्री ऑफ थर्ड टर्म is 2. This is about the degree of a term. Now we discuss about homogeneous expression. Homogeneous expression, a polynomial expression is called homogeneous
if degree of each term is same, if degree of each term is the same. For example, 7x4 y plus 8x cube y square plus 6x square y cube plus minus 3xy4. ये पॉलिनोमियल है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स आर 4 एंड वी डिस्कस अबाउट इट्स डिग्री ऑफ ईच टर्म. पहले टर्म की डिग्री क्या है? 5 है. x का पावर 4, वेरिएबल 4 है, x और y दो वेरिएबल है, y का पावर 1, 4 plus 1 5. सेकेंड टर्म की डिग्री 5, 3 plus 2 5. थर्ड टर्म की डिग्री 2 plus 3 5. फोर्थ टर्म की डिग्री 1 plus 4 5. दिस इज नोन एज होमोजीनियस एक्सप्रेशन. ऐसे एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं स्टूडेंट? होमोजीनियस एक्सप्रेशन कहते हैं स्टूडेंट. नाउ वी डिस्कस अबाउट द होमोजीनियस इक्वेशन. An equation is said to be homogeneous if degree of each term is same. Degree of each term is the same. अगर हर एक टर्म की डिग्री सेम है तो उस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? होमोजीनियस इक्वेशन कहेंगे. फॉर एग्जांपल, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर प्लस y क्यूब इक्वल टू 0. ये एक्सप्रेशन होमोजीनियस इक्वेशन है क्योंकि इसमें हर एक टर्म की डिग्री सेम है. पहले टर्म की डिग्री 3 है, दूसरे टर्म की डिग्री 3 है, तीसरे टर्म की डिग्री 3 है, फोर्थ टर्म की डिग्री 3 है. सभी टर्म्स की डिग्री 3 है इस इक्वेशन में, इसलिए इस इक्वेशन को हम कहेंगे होमोजीनियस इक्वेशन. टर्म की डिग्री मींस द सम ऑफ पावर्स ऑफ वेरिएबल इन अ टर्म. एक टर्म में जितने वेरिएबल्स आते हैं उतने वेरिएबल्स के पावर की एडिशन और इंडेक्स की एडिशन, that is known as the degree of term. Now number और एक लेते हैं, x4 minus 3x cube y plus 4x square y square minus 7x y cube plus y4 equal to 0. This is also homogeneous equation. क्यों? क्योंकि पहले टर्म की डिग्री 4 है, दूसरे टर्म की डिग्री 3 plus 1 4 है, तीसरे टर्म की डिग्री 2 plus 2 4 है, चौथे टर्म की डिग्री 1 plus 3 4 है और पांचवें टर्म की भी डिग्री 4 है. इसलिए दिस इज आल्सो नोन एज होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 4. नाउ स्टूडेंट, द नेक्स्ट डेफिनेशन वी डिस्कस अबाउट होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2. इसका डेफिनेशन सेम है. अगर कोई इक्वेशन में हर एक टर्म की डिग्री 2 होती है तो उस इक्वेशन को हम कहते हैं होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री. इस इक्वेशन को क्या कहेंगे हम? होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री. फॉर एग्जांपल, ax square plus 2hxy plus by square equals to 0. This is known as homogeneous equation of second degree. इसमें हर एक टर्म की डिग्री 2 हुई है. पहले टर्म की डिग्री 2 है, दूसरे टर्म में दो वेरिएबल है, x और y, x का पावर 1, y का पावर 1, 1 plus 1 2. तीसरी टर्म है y, उसका भी पावर 2 है. तो we say that homogeneous equation of degree 2 and we discuss about this homogeneous equation of degree 2. क्या होता है homogeneous equation of degree 2? इन शॉर्ट में बताता हूं. अगर दो स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास होते हैं, अगर 2 स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन
तो उसका कंबाइन इक्वेशन होता है L1 और L2 दो लाइंस है, ये दो लाइंस अगर ओरिजिन से पास होते हैं तो उस दो लाइन का कंबाइन इक्वेशन क्या होता है? होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। यही इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में हमें इन डिटेल डिस्कस करना है स्टूडेंट, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। स्टूडेंट्स, now we will discuss an important theorem with this chapter. क्या है ये थ्योरम? इस चैप्टर का थ्योरम नंबर 1 है joint equation of pair of lines passing through the origin represent second degree homogeneous equation in x and y. मीन्स अगर दो लाइंस है और ओरिजिन से पास हो रही है तो उनका अगर कंबाइंड इक्वेशन हम लेते हैं दैट रिप्रेजेंट्स सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। ये 3 मार्क्स के लिए ये थ्योरम एग्जाम में पूछते हैं स्टूडेंट्स। शो दैट द जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन इज अ होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स एंड वाई। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम। स्टूडेंट, ये क्या है? स्टेटमेंट, थ्योरम का स्टेटमेंट है। नाउ वी डिस्कस द प्रूफ फॉर दिस थ्योरम। लेट अस टू लाइंस वी कंसीडर पासिंग थ्रू द ओरिजिन। फर्स्ट लाइन इज a1x plus b1y equals to 0. Second one is a2x plus b2y equals to 0. Then their combined equation a1x plus b1y into a2x plus b2y equal to 0. We consider the locus represented by this combined equation. Now, suppose any point x1 y1 lies on this line. x1 y1 is a point lies on this one. Then whole equation becomes a1 x1 plus b1 y1 into a2 x1 plus b2 y1 equals to 0. Means suppose any point lies on this line, it satisfies the joint equation, it satisfies the combined equation. Or any point, suppose x2 y2 lies on this second line. Suppose एक point है x2 y2, अगर ये a2x plus b2y पे lies करता है तो we write it as a1x plus b1y equals to 0. So all the points lie on this line and second line lies on the locus 1. Then we say that the combined equation, it represents a1x2 plus b1y2 a2x2 plus b2y2 is equals to 0. अगर सेकंड लाइन पे भी अगर वही पॉइंट कोई रहता है तो वो भी दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करता है स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट वन, बोथ द लाइंस a1x plus b1y equals to 0 and a2x plus b2y equals to 0. We call it a स्टेटमेंट को हम स्टेटमेंट 1 है। क्या है स्टेटमेंट 1? अगर कोई एक पॉइंट फर्स्ट लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहा है लाई होता है तो वो कंबाइंड इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है। अगर कोई अनदर पॉइंट x2 y2 अगर सेकंड इक्वेशन पे है तो वो भी जॉइंट इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, वो पॉइंट जॉइंट इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। मैं कॉन्वर्स देखते हैं। कॉन्वर्स मींस सपोज एनी पॉइंट x0 y0 लाइज ऑन u into v equals to 0. If x0 y0 lies on this equation 1, situation 1, expression 1, then we say that a1x0 plus b1y0 into a2x0 plus b2y equals to 0. That is first equation 0 or second equation equals to 0 or both the equations equals to 0. This shows that any point on the locus 1 lies on line 1 or line 2 or both the lines. Now next one, for इस situation को हम situation B कहते हैं। Hence from situation A and B, it follows that equation 1 represent both the lines a1x plus b1y equals to 0 and a2x plus b2y equals to 0. That is the equation 1 is the joint equation of the lines.
तो क्या है इक्वेशन 1? देखो स्टूडेंट, जॉइंट इक्वेशन ऑफ द लाइंस a1x plus b1y into a2x plus b2y equals to 0. Now we solve these two brackets, a1x plus b1y into a2x plus b2y. इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो a1 a2x square plus a1 b2xy, अभी b1y से मल्टीप्लाई करते हैं, b1 a2xy plus b1 b2y square equals to 0. Okay students, now here a1 a2x square, मिडल दोनों टर्म में xy कॉमन है, तो a1 b2 plus a2 b1 xy plus b1 b2y square equals to 0. That let us a1 a2 को अगर आप a पुट कर रहे हैं, मिडल टर्म a1 b2 plus a2 b1 can be written as 2h and b1 b2 equals to b. Then the above equation becomes ax square plus 2hxy plus by square equals to 0. It is second degree homogeneous equation. It is a second degree homogeneous equation in x and y. It is second degree homogeneous equation in x and y. So students, ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं, मींस इक्वेशन 1 क्या है? It is the combined equation of two lines passing through the origin. Then we say that the joint equation, pair of lines passing through the origin, represents second degree homogeneous equation in x and y. Therefore, ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0 is the joint equation of pair of lines. Joint equation of pair of lines passing through the origin. Pair of lines passing through the origin. It is second degree homogeneous equation in x and y. It is second degree homogeneous equation in x and y. तो देखो स्टूडेंट, क्या कहेंगे हम? जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन. तो स्टेटमेंट का फाइनल, ये थ्योरम का फाइनल प्रूफ क्या है? Joint equation of pair of lines passing through origin represents second degree homogeneous equation in x and y. Second degree homogeneous equation in x and y. This is about the proof of theorem. So students, always remember that joint equation of pair of lines passing through the origin represents second degree homogeneous equation in x and y. This completes the proof of theorem. Now we discuss about the converse of last theorem. क्या है last theorem? Joint equation of pair of lines passing through the origin represents a second degree homogeneous equation in x and y. Now converse to that theorem is every second degree homogeneous equation in x and y represents a pair of lines passing through the origin. So students, see here, theorem can prove that
every homogeneous equation of second degree in x and y, that is ax square plus 2hxy plus by square equals to 0, represents a pair of lines through the origin. Now proof of this theorem. Now consider a homogeneous equation of second degree in x and y, that is ax square plus 2hxy plus by square equals to 0. इसको प्रूव करने के लिए हम तीन केस यूज करेंगे स्टूडेंट्स. क्या है पहला केस? पहला केस ये है स्टूडेंट्स कि b इक्वल्स टू 0. अगर इस इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर में b इक्वल टू अगर 0 है, then this equation reduces to ax square plus 2hxy equal to 0. दोनों टर्म में x कॉमन है तो ब्रैकेट में आएगा ax plus 2hy. Product of both the terms is 0, then each term equal to 0. That is x equal to 0 and ax plus 2hy equals to 0. It represents two lines passing through the origin. Case 2, a equal to 0 and b equals to 0. Then this equation reduces to 2hxy equals to 0. Then we can write it as x into y equal to 0. It represents two lines. X equal to 0 is equation of y-axis and y equal to 0 is the equation of x-axis. Now third case student, a is not equal to 0, b is not equal to 0. Then this equation ax square plus 2hxy plus by square, that is equation number 1, which is the second degree homogeneous equation in x and y. Divide both sides by b, then it becomes y square plus 2h by bxy minus a by bx square. इस इक्वेशन को हमने थ्रू आउट क्या किया, b से डिवाइड किया. बाद में ये जो टर्म है a by bx square, we shift in the left side, right side, then it goes to negative term. तो लेफ्ट साइड जो है ये कंप्लीटिंग स्क्वायर के फॉर्म में है. तो कंप्लीटिंग स्क्वायर करने में के लिए इसमें एक लास्ट टर्म ऐड करना होगा. लास्ट टर्म क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ y, हाफ द कोएफिशिएंट ऑफ y होल स्क्वायर ऐड करना है. इक्वेशन के बोथ साइड में करेंगे स्टूडेंट्स. देन वी गेट this on completing the square and adjusting we get it becomes y square plus 2h by bxy plus h square x square by b square. लेफ्ट साइड में और राइट साइड में भी h square x square by b square ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड becomes y plus h by b का होल स्क्वायर है लेफ्ट साइड, एंड राइट साइड में x स्क्वायर अगर कॉमन लेते हैं h स्क्वायर माइनस ab by b स्क्वायर है. लेफ्ट साइड परफेक्ट स्क्वायर है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, then it becomes square cancel हो गया y plus h by bx equals to plus or minus under root h square minus ab by bx. then y h by bx राइट साइड में शिफ्ट किया, that is minus h by bx हो गया. दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, then y equals to minus h plus or minus under root h square minus ab by bx. therefore the equation represent two lines, that is y equals to minus h plus under root h square minus ab by bx and y equals to minus h minus root h square minus ab upon bx. अब और इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है बोथ रिप्रेजेंट्स अ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन. इन दोनों इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट नहीं है स्टूडेंट. देन बोथ द इक्वेशन रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन. अपना एक तो हम ये कहेंगे कि ऑल सिचुएशन अंडर सम कंसिडरेशन एवरी होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन. तो ये बात तय हो गई कि सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन इन एक्स एंड वाई दो लाइन रिप्रेजेंट करता है पासिंग थ्रू द ओरिजिन. तो स्टूडेंट वो दो लाइन का नेचर क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे. नेचर ऑफ लाइन मींस whether the lines are distinct or coincident, whether the lines are imaginary or real, that is we have to discuss in the nature of roots. Y equals to minus h plus root h square minus ab by bx and y equals to minus h minus root h square minus ab by bx, that are the two lines passing through the origin, represents a general second degree equation in x and y. Now nature of lines is depend upon h square minus ab. ये रूट में जो टर्म है h स्क्वायर माइनस ab वी कॉल इट एज डिस्क्रिमिनेंट. वो डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर नेचर ऑफ रूट्स
डिपेंड होता है स्टूडेंट। नाउ एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, लाइंस आर रियल होते हैं। एच स्क्वायर माइनस ए बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, राइट लाइंस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस इक्वल टू 0 है, लाइंस आर रियल एंड कोइंसिडेंट। एंड एच स्क्वायर माइनस ए बी इज लेस देन 0 है, द लाइंस are imaginary, means equation does not represent the lines. This is the theorem, this is the proof of the theorem, students. Now from this theorem we say that every second degree homogeneous equation in x and y represents a pair of lines passing through the origin. Okay students, ये important theorem है, ये theorem एग्जाम में पूछते हैं, बोर्ड एग्जाम में एग्जाम डेफिनेटली एक ये थ्योरम और एक नेचर ऑफ रूट्स 4 मार्क्स के लिए पूछते हैं स्टूडेंट्स। ऑलवेज रिमेंबर इट एंड टेक द बेनिफिट ऑफ दैट वन। बेस्ट लक। नाउ डिस्कस अबाउट सम एंड प्रोडक्ट ऑफ स्लब्स। स्टूडेंट वी नो दैट एवरी सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन इन एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट्स टू लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड लेट the two lines having two different slopes. Then what about the sum and product of that two slopes of lines that is useful to solve the examples on a pair of lines? Sum and product of slopes. Y equal to minus h plus under root h square minus ab upon bx and y equals to minus h minus under root h square minus ab upon b into x are two lines. Let m1 and m2 are the slopes of given lines. ये दो लाइन का स्लोप है m1 and m2। तो m1 क्या होगा स्टूडेंट्स? माइनस h प्लस अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ab बाय b, ये m1 हो गया। एंड m2 क्या होगा स्टूडेंट्स? माइनस h माइनस h स्क्वायर माइनस ab अपॉन b हो गया। तो इन दोनों स्लोप्स की प्रोडक्ट क्या होगा? m1 इंटू m2 इक्वल्स टू, ये दोनों का प्रोडक्ट ले रहे हैं स्टूडेंट, ये a प्लस b और ये a माइनस b है, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर न्यूमरेटर में a स्क्वायर माइनस अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ab अपॉन b स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू h स्क्वायर, ये रूट कैंसिल, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, माइनस एच स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन बी स्क्वायर, एच स्क्वायर कैंसिल, बी और ए स्क्वायर कैंसिल, ए बाई बी। देन द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स इज m1 into m2 equals to a by b. Now we discuss about the sum of the slopes. m1 plus m2 equals to वो आएगा स्टूडेंट्स माइनस h प्लस अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी और ये माइनस h माइनस अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है स्टूडेंट। तो इन दोनों की अगर आप एडिशन करते हैं तो रूट h स्क्वायर माइनस ए बी माइनस रूट h स्क्वायर माइनस ए बी कैंसल, ये होगा माइनस 2h बाई बी। Sum of the slopes minus 2h by b. Product of the slopes a by b. This is the sum and product of two slopes. Now we discuss about the next point, the auxiliary equation. क्या है next point? Auxiliary equation. क्या होता है auxiliary equation? See here student. Let m1 and m2 are the roots of quadratic equation.
Therefore, m minus m1 into m minus m2 equals to 0. ये दो लाइंस के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं. Now we solve this one. m square minus m2m minus m1 into m plus m1 into m2 equals to 0. See here, students. Then it becomes m square minus m1 plus m2m plus m1 into m2 equals to 0. And we know that m1 plus m2, sum of the roots minus 2h by b. m1 into m2, product of the roots a by b. Then we write it as m square minus 2h by b m plus a by b equals to 0. Then we solve it. It becomes bm square plus 2hm plus a equals to 0. This is called auxiliary equation. Auxiliary equation of the second degree homogeneous equation ax square plus 2hxy plus by square equals to 0. Now, what is the relation between the roots of auxiliary equation, roots of this auxiliary equation and slopes of lines represented by second degree equation? The roots of auxiliary equation are slopes of lines represented by roots of auxiliary equation are the slopes of lines represented by ax square plus 2hxy plus by square equals to 0. ये auxiliary equation है bm square plus 2hm plus a. This is the auxiliary equation for the equation ax square plus 2hxy plus by square equals to 0. There is one more method to find auxiliary equation. See here, if ax square plus 2hxy plus by square equals to 0 represents two lines passing through origin. Now, passing through origin O0, 0, and let P of x, y be any point on the line represented by ax square plus 2hxy plus by square equals to 0. P of x, y एक लाइन है, तो स्लोप ऑफ लाइन क्या होगा स्टूडेंट? Slope of line. Slope is the difference between ordinates and difference between abscissa. That is y by x, and slope is denoted by m. तो स्टूडेंट ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 डिवाइड बोथ साइड बाय x square. Equation 1 divided by x square. Then this equation becomes b y by x whole square plus 2h y by x plus a equal to 0. And we put y by x equal to m, that is bm square plus 2hm plus a equal to 0. It is auxiliary equation. It is auxiliary equation for ax square plus 2hxy plus by square equals to 0.
This is the one more method to find out the auxiliary equation. Now student, we discuss about the theorem. This is a very important theorem in this chapter. Acute angle between the lines. Which lines? That lines represented by second degree homogeneous equation in x and y. Means you know that this equation is x square plus 2hxy plus by square equals to 0. It represents two lines. And what should be the angle between that two lines? That is we have to discuss from this theorem. See here students. Statement of theorem is, if theta is the acute angle between the lines given by ax square plus 2hxy plus by square equals to 0, then prove that tan theta equals to 2 root h square minus ab upon a plus b, provided that a plus b is not equals to 0. Now the proof of theorem is, student, let m1 and m2 are slopes of lines represented by ax square plus 2hxy plus by square equal to 0. We call it equation number 1. Therefore, y equal to m1x and y equal to m2x. m1 and m2 are slopes of the lines represented by this equation. Then their separate equation y equal to m1x and m2x. Therefore, m1x minus y equal to 0 and m2x minus y equal to 0. There are two lines. Their combined equation is m1x minus y into m2x minus y equal to 0. Next line, therefore, m1 m2x square minus m1xy minus m2xy plus y square equals to 0. Next line, m1 m2x square minus m1 plus m2xy plus y square equals to 0. Equation number 2. See here, student, equation 1 and 2 represent the same lines. Equation 1 and 2 represents the same line. Then the coefficients are in proportion. If both equations represent the same line, therefore their coefficients are in proportion. Means यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट m1 m2 है, यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, m1 m2 upon a, m1 m2 upon a. Next, xy का कोएफिशिएंट minus of m1 plus m2 upon 2h equals to y square का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 और यहाँ पे b. We get a relation. From this relation we find out m1 plus m2. First and last को equate किया, then we get a by b. Now we find out m1 plus m1 into m2 is a by b, first and last. m1 plus m2 is minus 2h by b. Now we get the sum of the slopes and product of the slopes. Now students, here m1 minus m2 whole square mod of m1 minus m2 whole square equals to m1 plus m2 whole square minus 4 times m1 into m2.
m1 minus m2 whole square equals to m1 plus m2 whole square minus 4 times m1 into m2. This is the relation between sum of the slopes, product of the slopes, and difference between the slopes. This is the relation between difference, sum, and product of slopes. Now students, next step, m1 plus m2 की वैल्यू है माइनस 2h by b का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स m1 into m2 है a by b. तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगी देखो स्टूडेंट्स, 4h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 4a by b. एलसीएम आ गया b स्क्वायर, 4h स्क्वायर माइनस 4h स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए बी. तो देखो स्टूडेंट्स, m1 माइनस m2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4h स्क्वायर माइनस ab अपॉन b स्क्वायर. नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, m1 minus m2 equals to 2 root h square minus ab upon b. This is the m1 minus m2. We know m1 plus m2 and m1 into m2, but we find out m1 minus m2. Now student, let theta be the acute angle between the lines having slopes m1 and m2. दो लाइंस हैं, उनका पहले का स्लोप m1 है, दूसरे का स्लोप m2 है, और उन दोनों के बीच में का एंगल थीटा है. Therefore tan theta equals to mod of m1 minus m2 upon 1 plus m1 into m2. This is the formula for angle, acute angle between the lines. Tan theta equals to m1 minus m2 upon 1 plus m1 into m2. Now we keep the values. Therefore here student, tan theta equals to m1 minus m2 की वैल्यू क्या है, mod of 2 root h square minus ab upon b and 1 plus m1 into m2 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, a by b. Now we get mod of 2 root h square minus ab upon b whole divided by a plus b divided by b. b cancel. Therefore tan theta equals to mod of 2 root h square minus ab upon a plus b. तो स्टूडेंट ये मॉड क्यों लिया गया है, क्योंकि मॉड प्रेजेंट्स द एब्सोल्यूट वैल्यू. क्योंकि एक्यूट एंगल जो होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसलिए हम we can consider the angle theta is acute and therefore we take tan theta equals to mod of 2 root h square minus ab upon a plus b. This is the complete proof of the given theorem, acute angle between the lines. See students, this is second degree homogeneous equation ax square plus 2hxy plus by square equals to 0. In this equation, when b equals to 0, if b equals to 0, then this equation reduces to ax square plus 2hxy equals to 0. We can take x common, that is ax plus 2hy equal to 0. It represents two lines, x equal to 0 and ax plus 2hy equals to 0. Suppose this is coordinate system and this is the angle. If theta is the acute angle between, if theta is the acute angle between the line
theta 1. If theta 1 is the acute angle between the line ax plus 2hy equal to 0 and x-axis. Therefore, theta 1 equals to tan inverse of, that is tan inverse of coefficient of x upon coefficient of y. Now let theta be the angle between the line x equal to 0 and ax plus 2hy equal to 0. Therefore, theta equals to pi by 2 minus theta 1. And theta equals to pi by 2 minus theta 1. This is the remark about this theorem. Now, one more thing. If this equation ax square plus 2hxy plus by square equals to 0, it represents two lines, and theta is the acute angle between line. M1 and M2 are slopes of lines. Slopes of lines represented by equation. Therefore, M1 plus M2 equals to minus 2h by b, and M1 into M2 equals to a by b. Okay. Number 1. If lines are perpendicular, then we know that M1 into M2 equals to minus 1. Lines perpendicular, तो product of slopes क्या होता है? minus 1 होता है. Therefore, a by b equals to minus 1. That is, a plus b equals to 0. If lines are perpendicular, then a plus b equals to 0. That is, coefficient of x square plus coefficient of y square is equals to 0. This is first thing. Number 2, if lines are parallel, तो कंडीशन क्या होती है स्टूडेंट? M1 equals to M2. लाइन्स पैरेलल है, M1 equals to M2. That is, if auxiliary equation bm square plus 2hm plus a equal to 0 have equal roots. Roots are equal. That is, its discriminant discriminant 4 times h square minus ab equals to 0. That is, h square minus ab equals to 0. Lines are parallel, therefore h square equals to ab. This is the condition for parallel lines, and this is the condition for perpendicular lines, represented by the equation ax square plus 2hxy plus by square equals to 0.